हर घर में होता है मास्टर शेफ़। उसी मास्टर शेफ़ को सलाम करती है हमारी ये वाह शेफ़। इस हफ्ते वाह शेफ़ लेबर पार्टी के पॉलिसी एडवाइज़र प्रियंका राधाकृष्णन के घर में आए हैं। सो चलिए वो आज हमें कौन सी रेसिपी दिखाते हैं। आज हम प्रियंका राधाकृष्णन के घर में हैं, जो कि लेबर पार्टी के पॉलिसी एडवाइज़र हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हेलो प्रियंका, हाउ Hi, आर यू? Shagam. I'm very well, thank you. ऑलराइट, सो प्रियंका आप हमें बताइए न्यूजीलैंड कैसे आना हुआ? मैं न्यूजीलैंड 2004 में आई थी. I came here from Singapore, where I grew up. Originally मैं भारत से हूँ, but I studied and I worked for a few years in Singapore. Came here in 2004 to Palmerston North, where I finished my degree. ओके, सो ओरिजिनली इन इंडिया आप कहाँ से हो? मैं केरला से हूँ. केरला? South West coast of India. न्यूजीलैंड में आप लेबर पार्टी के जो एडवाइस पॉलिसीज में हो, तो वो आपने कैसे शुरू किया और क्या काम कर रहे हो अभी आप? I actually joined Labour Party 2006 में. So it's been 10 years. I've been a volunteer with the party and a member. 2004 general election में मैं एक Labour Party list candidate थी. At that point, I was working with the Ministry of Women's Affairs in Wellington, and then moved up to Auckland to work with the party in this role as a policy advisor. So Priyanka, how come cooking? आप कुक कितना करते हो? Do you like cooking? I do. I like cooking, but cooking पसंद है, लेकिन when I have time usually. So I like to be able to pick a recipe that I enjoy eating, have some friends over. आज हमारे वाह शेफ के दर्शकों के लिए आप कौन सी रेसिपी लेके आए हैं? It's called masaman curry. मसमन करी. Masaman curry. Oh, that's like right. interesting name and मैंने कभी सुना नहीं है. ये क्या रेसिपी है, हमें बताइए आप. So I'm doing it with chicken today, but it's actually a recipe that you can use any sort of meat except pork, and there's a reason for that. Okay. Masaman curry का history बहुत interesting है. Alright. It actually originated in India, and traveled through. I understand from what I've heard and what I've read, with the spice trade. It traveled down to Southeast Asia via Malaysia and finally to Thailand. And the name is thought to have come from Musalman, so Musalman curry, and that's why pork is never used traditionally. Okay. So that's what Masaman curry is, sort of a confluence or a mix of different ethnicities, different influences from different countries, largely from India and Southeast Asia. And I picked this country because my identity has a bit of both. So I am Indian. I identify mostly as Indian, but I've grown up in Southeast Asia, in Singapore, eating Malay food and Thai food. And I've also adapted the recipe a little bit to suit New Zealand palates as well. So it's a little bit of Indian, Southeast Asian, and New Zealand, which is how I identify. Wow, I'm really excited and I'm sure हमारे दर्शक भी बहुत excited होंगे इस रेसिपी को देखने के लिए. तो चलिए आइए हम बनाते हैं ये रेसिपी आपके साथ. ठीक है, चलिए. अभी आपने देखा प्रियंका जी ने हमें बताया अपने बारे में और एक नई एक्साइटिंग रेसिपी जो कि है मसमन करी, उसके बारे में. सो अब जानेंगे इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं एक ब्रेक के बाद.